नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ है आशिम, शुभम और शोरोशिनी। शुभम, सॉरी, Why would you do that? टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। और पता चल रहा है मुझसे कि बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके हैं और अब थोड़ा नहीं, सा ये पहला है। नहीं और आपके लिए हम वेट कर रहे हैं। सुबह से देखो, घड़ी पे टाइम देखो। सॉरी। ओके, वेल शुरू करते हैं। नाम का मतलब प्लीज जो बताया जो था आपने। हमारे सूर्य देवता है, उनकी जो सेनापति है, उनकी बेटी बेसिकली सेनापति का नाम होता है सूर्य सेन, वहां से शोरशनी, एंड शोरशनी आल्सो यूज्ड टू बी अ लैंग्वेज इन प्रकृत। ओके डन गाइस। प्रकृत। तो ना सलीम और दानियल ने सबके दिल जीत लिए हैं, लेकिन एक ऐसी कॉम्प्लीमेंट आपको मिली जो आपके हमेशा दिल के करीब रहेगी, तो वो कौन सी होगी? मैं बोल नहीं सकता। एक ने बोला था कि काश मैं वो नहीं बोल सकता, सॉरी। मेरे लिए सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए यही है सलीम के लिए कि nobody else could have done a better job than what you've done with Salim, and that for me is a big compliment because we all know that Salim's been played before and right. Yeah, of course. बिल्कुल। दानियाल यार, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट सलीम और दानियाल के लिए तो बहुत सारे मिले हैं मुझे मेरे दोस्तों से कि उन्होंने हमारे ब्रदरहुड में विश्वास किया और फिर उनको एंड में वो क्यूरियोसिटी हुई कि आगे क्या होगा अब। फॉर माय कैरेक्टर it's the same thing yaar, it's from a lot of people that I could justify the transition of how someone goes rogue and वो कैसे बुरे बनते हैं। हम आमतौर पे फिल्मों में देखते हैं कि ये बुरा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, पर किसी को बुरा बनते हुए नहीं देखते हैं। तो वो मैं निभा पाया और लोगों को पसंद आया, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका ये सवाल पूछने का और उनका देख के सोचने का। कि जैसे कि आप हमने दानियल का किरदार को देखा है, काफी लेयर्स भी है इमोशंस के, उसका कितना चैलेंजिंग था? तो पहले अंदर में गंजी पहनता था, उसके ऊपर नहीं, लेयर्स कैरेक्टर की लेयर्स हैं। अरे लेके जाओ रे इसको। तो कैरेक्टर की बहुत लेयर्स हैं। वो मासूम भी है, अल्लाह में विश्वास भी करता है, बट कन्फ्लिक्टेड है अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में फर्स्ट पार्ट में। तो बहुत सारी हैं, बट ये तो हम हर इंसान में होती है ना, बहुत सारी लेयर्स यार। तो बस उसको वैसे ही तैयार किया गया था, एक कंफ्यूज बच्चे की तरह सोच के कि वो फिगर आउट कर रहा है अपने आप को लाइफ में, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। राइट। सो जिस तरह से आपका जो पोस्टर आउट हुआ, तब ये कहते हैं सलीम के वेपन्स में से एक वेपन मेहरुन्निसा फटा पोस्टर निकली मेहरुन्निसा। सलीम का सीक्रेट औजार। राइट। हाँ जी। सो हाउ कम यू केम ऑन बोर्ड, जिस बारे में जानना चाहेंगे। और मेहनत की है इसलिए लिए। नो, तो सीजन 1 में मेरा कैरेक्टर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका था, लाइक माय चाइल्ड वर्जन। यू गाइस आर नॉट गोना स्टार्ट विद द सॉन्ग। नो, ओके। My character was already introduced in season 1 but that was my teenage self, जिसको सलीम रेस्क्यू करते हैं, जिनके फैमिली को सलीम रेस्क्यू करते हैं। और सीजन 2 में मैं बड़ी हो गई हूँ, एंड टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक मेहरुन्निसा, आई थिंक इट्स बीन एन ऑनर, एंड टू पोर्ट्रे द जर्नी, मेहरुन्निसा's journey to become Noor Jahan, I think it was really, really challenging but also rewarding. So yeah, and I'm really thankful to the makers for considering me for this role. Yeah, and I'm really hoping that when the audience, they watch the show, I hope they like the show and me, and I'm hoping that they think that I've done justice to the part. I'm sure. You know, सलीम के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। जब आपको एक किरदार ऑफर हुआ और आपने ये जर्नी शुरू की, शुरुआत में कितना जानते थे, और जब ये जर्नी आपने जी तो कितना जानने लगे? मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने के लिए, बट इनफैक्ट मैंने तो स्क्रिप्ट भी मैंने एक हफ्ते में ख़त्म की थी, बिकॉज आई वाज शूटिंग फॉर समथिंग एंड आई हैड 1 वीक टू स्टार्ट शूटिंग फॉर दिस शो। तो उसमें मैं अपने हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग के दौरान, और जब मैं when I was on my way for that and on my way to sword fighting, I used to read one episodes on the way. तो स्क्रिप्ट एक्चुअली लिखी बहुत अच्छे से गई है।
उस स्क्रिप्ट में ही इतना कुछ है सलीम के बारे में. And also I knew what Salim was like, not because I'd seen Mughal Azam, but also like I knew like he was he loved poetry, he loved आशिकी, मोहब्बत, मौसीकी, जो मैंने शो में भी बोला है. But apart from that, there were certain things that I thought that it was important for me to portray and bring to Salim, which was make him very vulnerable and real, keeping the fact that it's period drama and still making him a little contemporary, so that people relate to who Salim was. And I wanted people to know and think that okay, when they watch Salim and they watch me as Salim, they would look at it and be like, yeah, I want a brother like him, or I want a lover like him, or I want a son like him. So that humane part of Salim is what I've tried to bring to the character. And I think, like, according to whatever the reactions I've gotten and the comments I've read, people have actually related to Salim a lot, and they've really, really praised Salim and the way I have portrayed him. Right. So for me, that's a big, big up, and I'm very happy about it. राइट. तो कहानी, आपकी एक्टिंग के साथ साथ आपके कॉस्ट्यूम भी काफी पसंद है. ये कॉस्ट्यूम ड्रामा है. कॉस्ट्यूम्स ड्रामा के बारे में एक चीज जो आपको पसंद है और एक ये पूरा तामझाम पहनते हुए आप टॉलरेट करते हो, तो क्या होगा? सबसे पहले तो मैं अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनर को शुक्रिया करना चाहूंगा, निरुषा निकट. उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है. आई वर्कड विद हर बिफोर एंड शी इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. तो देयर इज नो टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर हैज बीन very solid work there. So thank you, Nirusha ji. Secondly, the one thing that's very good about it is कि हम लगते बड़े अच्छे हैं. At least मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे लग रहे थे, हम सब. It gives you the feel of royalty. Yeah. और आधा कैरेक्टर की मेहनत तो वहीं पे खत्म वही हो जाती है ना, कि पहनते ही तुम फील करने लगते हो. And I think whatever I've seen, I'm so sorry Ashim, because whatever I've seen in season 1, हम जब नॉर्मली शूट कर रहे होते हैं और इन लोगों को कॉस्ट्यूम में देखते हैं या फिर खुद को कॉस्ट्यूम में देखते हैं, बट व्हाट द वे सीजन 1 हैज टर्न्ड आउट, आई थिंक द कॉस्ट्यूम्स लुक so grand when you're looking at them on screen. They give a completely different feel to all the characters. I think she has done a wonderful job there. She's also a very beautiful chef and I makes the best food. She has a restaurant called Naushe Jaan. Everyone must try it. I know. पता है मुझे, so मैं फॉलो करती हूँ. So yeah. So the second part of your question, which is what is not the best and the most comfortable thing about the costumes, is that it's not comfortable. It's as simple as that. It's heavy, and it's one thing to just sit on a place and perform scenes wearing your costumes, and the other is wearing them and doing the action that we've done, the horse riding that we've done, being in the heat because they're heavy and they're like full of ornaments and all of that. So they're definitely very challenging, but then I think this is why we signed up for what we do. This is a part of the deal. So I'm not going to complain anymore about it. I'm glad that I look good in it, and people work very hard to make me look good in whatever I wear. That's it. Shubham? यार क्या कहा जाए, बहुत पहली बात तो दोस्त कॉस्ट्यूम्स, जैसा कि मैंने कहा, आधा काम तो वही कर देते हैं, क्योंकि जब तुम उन्हें पहनते हो, जब तुम वो मेकअप में होते हो और वो सब, तो आधी तरीके से तो तुम वहीं पे इन मार जाते हो कैरेक्टर में. और दूसरी बात ये कि हाँ, बहुत मज़े आए हैं, बट बहुत वाट भी लगी थी हमारी. बट मेरी अदिति जी ने ऑलरेडी बैंड बजाई हुई है ये कहने के लिए कि उन आर्मर्स को पहन के लड़ना बहुत मुश्किल होता है एंड ऑल दैट, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारा तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट में था, बट लड़कियों को तो हमेशा ही दे हैव टू वेयर सच हेवी कॉस्ट्यूम्स एंड हेवी आउटफिट्स एंड हेयर एंड तामझाम एंड मेकअप एंड ऑल दैट. So I'm not going to complain. Hats off. I don't know how you guys do it. सभी लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ for doing that, and yeah, there's no complaints. But yeah, obviously we were shooting in Amgaon in the heat, so हम Weather लोग was definitely not on our side. हम लोग मर जाते थे मैगी वैगी खा के, जैसे अपने आप को खुश रखते थे. ये मैगी खाता था. हाँ, but खुश रखता था. Little pleasures. But the costumes are beautifully done, and so were we in those costumes. बिल्कुल. Same thing, yeah. The costumes, as I already said, that costumes play such an important role, especially when we are shooting for historical drama. Yeah, and my costumes were, I was lucky that the regular wear costumes were still better than most of the other characters' costumes, but this headgear.
this headgear Headgear. used to they were almost like the death of me. But they looked nice. I felt royal after wearing it. So yeah, thanks to Nirusha ma'am definitely for not only designing the outfits but also for creating the entire look. And it has taken, I think, we have to thank our respective teams who have worked for makeup, for hair, for everyone, because it's not a one-man show. So I would really like to thank all the people who have helped us look good on screen. Yeah, and they were pretty unbearable too, because I had one outfit and I think the total weight of the outfit was around It sounds 30 like the kg. people were unbearable. Around 30 kgs. Yeah. The it was outfits she bad. meant. The outfits. Yeah, not mine. The outfits. तो टोटल मतलब अराउंड 70-80 किलो की फ्लैश एंड ब्लड में घूमती हुई दिखती हाँ. थी वहां पर हमें. हाँ. भारी औरत. ओके सो गाइस, पहला इंप्रेशन क्या था एक दूसरे के बारे में, और देन जिस तरह से तू बोल. शूटिंग की समय गया तब कितना कुछ चेंज हुआ? Objectifying. तो मैं आशिम को पहले से जानता हूँ. God. और मैं आशिम का मुझे बहुत खूबसूरत नौजवान लगता था, बट आई वाज लाइक कि सलीम इज अ वेरी 1957 की बात है. Salim is a very complex part and all that. So I'd seen some of his work, but when I reached on set is when he really surprised me. When I reached on set is when he really surprised me. कमाल के एक्टर हैं. और आपका क्वेश्चन क्या था कि कैसे हम लोगों का पहला इंप्रेशन था? आज की डेट में आई हैव अ ब्रदर ऑफ स्क्रीन एंड आई थिंक इससे बेटर सलीम कोई हो नहीं सकता है. फॉर मैनी रीजंस, नॉट जस्ट लाइक द वे ही लुक्स. वो दिखता तो बहुत अच्छा है ही, बट वो उसके दिल को समझ पाया और उसकी सोल को. इनके बारे में ये मुझे पहली बार देखा था तो मैंने इनसे पूछा था कि क्या आप इन्फ्लुएंसर हैं? तो इन्होंने सड़ी हुई शक्ल बनाई थी. अभी भी बना रही होंगी. अच्छा, अब नहीं बना रही. नो इन्फ्लुएंसर्स आर ग्रेट, बट वैसे ही पूछा था मैंने. मस्ती कर रहा था मैं, टांग खींच रहा था. बट फिर मैंने इनको परफॉर्म करते हुए देखा. आप एक्टर हो या इन्फ्लुएंसर हो, ऐसे पूछा था. बट फिर मैंने इनको काम करते हुए देखा अपने सामने. मतलब हमारे सीन्स नहीं है, बट मैं जाता था क्योंकि मैं फैन बन गया था इनका सेट पे. और बहुत ही डिमीनर और आंखें और नजाकत और क्या बोली, मतलब मैं फैन हूँ. तो ये पहला इंप्रेशन टू लास्ट इंप्रेशन. आंसर. What about you? Yes. Thank you. Even though I play Mehrunissa to Salim, we didn't really get any workshop or we didn't really get any prep time. I met him directly on the set way later. And I had watched some songs of Tummin 2 of Asham. I had not watched the film till then, but I had seen a lot of his commercials. And of course, he is a super attractive man, but it's very... There's no denying that. Well, thank you. Yeah, but you never know. I think the best quality about Ashim is that he makes anyone around him feel very, very comfortable. And I had come down all the way from Kolkata, and language barrier was there. It was a new team to work with, and most of my scenes were with him. But when I met him, he made me so comfortable that I never really felt that I was meeting him or, working with him for the first time. So thank you for that. Full time entertainment है. हाँ. And Shubham, ठीक है, आया है, नया काम कर रहे हैं. Sweet boy, good behavior. And Cute. dot. No, but he was the first friend that I made on the set of Taj. So thank you for that. I think... and I still remember I first met him at Nagaur. That was my first day of shoot, and I was not having a great day. But and I was meeting him for the first time, but this one I was really frustrated. This one really lent me a lot of support. यही रोल था मेरा ताज पे. He was sweet. मैंने He was इनका very मूड sweet. अच्छा किया. हाँ, entertain करता था मुझे. Personal entertainer. Thanks. So Surosini, He doesn't my remember, first I'm telling impression. See, it was also a very long time ago. you. Yeah. It's been December like 2.5 2021. 2 years. But when I met her, I spoke to her and I did scenes with her. It was like 3 different persons. One was this girl who's come from Kolkata, who looks a little lost. And naturally so, because you come into a well-settled set, comfortable actors, because they've been performing for a bit, and it's period drama, so it's not an easy thing. True.
So that was, I think I took it upon myself also to feel like, okay, you know, like this is somebody who I have to have a camaraderie with, and it must be off screen as well. So that ways, I think it was very interesting to see how she's gotten out of a cocoon and just, you know, out of a shell and just blossomed into this from Roshni to a beautiful Mehrunissa. And I have to say that she's she's done a fantastic job. And as an actor, I can talk because I don't know her very well as Roshni. We've not gotten that amount of time to spend, but whatever little time I've spent with her, it's just been warm. It's been a great experience, even for me as an actor, to learn, and a great reciprocator. So sweet. So that ways, I think it's a very good collaboration with her. Shubham, on the other hand, it's a tough Whenever one. people talk about you, they're It's a she's an objectable human being. objectionable. Objectionable. No, I know him from before, and I think that I take great pride in saying that. We weren't as good friends as we're brothers today. And when we were on set, I think we've had many conversations about our characters, and I think that got us to bond better and helped us with our scenes a lot. And you can see that in our relationship as Daniel and Salim. But what I love about Shubham Mehra is that this man has a very big heart, okay, and he has a very special power to listen, which not many people do. Okay, people hear you, but they never listen mostly. Yeah. And I think he's one person who'll just like always be there. And I was going through a lot during the time personally, and I just remember that I was just constantly. There were two people entering my room. One was Salim and one was Destroyed Ashim. And I just remember one thing, and I'll always hold that very close to my heart, that he was always there, and he would always he wouldn't say much, but he would just listen. And sometimes, you know, you just need somebody to just listen to you and not give your opinions, and you feel heard. And he's that guy. I think it's the most beautiful relationship you can have with another human being when you just listen. Right. And that is Shubham for me. He's I love him. क्या बात है हाँ, so cute. Guys, Yeah. सबने अपने दिल की बात कह दी. अब फैंस को अपने दिल की बात कहिए और बताइए 3 रीजन एक सी. यस 3 रीजन अब ताज देखने के. हम तीनों हैं. हम तीनों हैं. आपने अगर ताज का पहला सीजन देखा है तो दैट्स अ बिग इनफ रीजन टू वॉच द सेकंड पार्ट. और अगर नहीं देखा तो इवन बिगर रीजन, बिकॉज दो सीजन्स एक बारी में. क्या बात है, क्या साथ में बिंज कर लो. And it's a bigger season. It's a brutal season. If you're interested in something dark and something of a redemption, then this is something that you'll really enjoy. And I really hope that all our hard work pays off when you watch it and give it your love. And I believe that we've given everything that we had, more than our body, soul and sweat and blood and everything. And I hope we do justice to whatever we've done, and I hope you like it. So please go watch it. And please watch it not for 3 reasons, but for many. There are many reasons. Yeah. There are many reasons. There are many reasons to watch Taj, and yeah. You just promise that it'll be worth your while. अब भीख थोड़ी मांग लेंगे. देख लो यार, देखना है तो. We promise. बहुत देख लो, confidence please मेरे देख लो. में. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक Thank यू. Thank you.